Jai Jinind. I am Neetu Jain. Welcome to my channel Success Angel. In this video, I am going to discuss Section 1 of Companies Act 2013. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। जब भी हम किसी भी लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि उस लॉ का नाम क्या है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल। वो लॉ कहां पर एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल है। जनरली किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 हमें ये 4 चीजें बताता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 1 में भी हमें यही बताया गया है। सब सेक्शन 1 is telling us the name of the act. This act may be called the Companies Act 2013. Subsection 2 is telling us the extension of the act. According to subsection 2, this act extends to whole of India, means on all states and union territories of India, nothing is excluded. Subsection 3 is telling us about the commencement of the act. According to this subsection, section 1 of Companies Act 2013 is enforceable at once. मतलब the date on which this act was notified in the official gazette means 30th August 2013, and remaining provisions of this act shall come into force on such dates as may be notified by the central government from time to time. तो सेक्शन 1 तो 30th अगस्त 2013 को ही एनफोर्स हो गया था और बाकी सेक्शंस भी अलग अलग डेट्स पर नोटिफाई किए गए। As on now, nearly all the sections of the Act are enforceable, or you can say Companies Act 2013 is completely applicable. Subsection 4 is telling us about the application of the Act on different companies. According to subsection 4, the provisions of this Act shall apply to companies incorporated under this Act or under any previous company law. It means this act is not only applicable to companies registered under this act, but also applicable to companies which were registered under any previous company law, like Companies Act 1956. This is because with the enforceability of Companies Act 2013, all previous company laws became ineffective. Further, central government may notify other body corporates which may not be registered under company law, on which the provisions of this act may be applicable. Subsection 4 is also talking about some special companies like insurance companies, banking companies, companies engaged in the generation or supply of electricity. ऐसे कंपनीज के ऊपर इस एक्ट के साथ साथ कुछ स्पेशल एक्ट्स भी एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 आर एप्लीकेबल। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज provisions of the Banking Regulation Act 1949 are applicable, and in case of companies engaged in the generation or supply of electricity, provisions of the Electricity Act 2003 are applicable. अब सवाल ये है कि अगर किसी भी मैटर पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस इन स्पेशल एक्ट्स के प्रोविजन से अलग है, तो ऐसी कंपनीज किस एक्ट की बात मानेगी, कंपनीज एक्ट 2013 की या जो स्पेशल एक्ट उन पर एप्लीकेबल हैं उनकी। सपोज विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 आर डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013. In such case, whether company has to comply with the provisions of Insurance Act 1938 or Companies Act 2013. According to subsection 4, ऐसे केसेस में कंपनीज को अपने स्पेशल एक्ट की बात माननी है, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 की। I hope section 1 of Companies Act 2013 is now clear to all of you. In the next video, I will discuss another section of this act.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय जिनेंद्र।